Hey, welcome back to Happy History. Here we are, ready to rock and roll with the second chapter of history, Historiography, Indian Tradition. It's a very simple chapter that helps us understand historiography in our own Indian tradition. जैसे तुम्ही बघू शकतात, as you can see, this chapter has only two sections. Yay! Only two sections. Tradition of Indian historiography and Indian historiography, various ideological frameworks. Two sections and the chapter is done. So, are you ready to attack the first section, Tradition of Indian Historiography? The first section, Tradition of Indian Historiography, has three sections. Historiography in the ancient period, historiography in the medieval period, and historiography in the modern period. Here we begin with historiography in the ancient period. Okay, so to begin with, can you think of some forms to preserve history? हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए एंशियंट पीरियड में what were the different forms used? Can you think of some? Can you guess some? Come on, you can. Could you? If you could, great. If you couldn't, let me give you a hint. We had talked about them in the first chapter too. Yes, first chapter में इसके बारे में बात हुई थी. अगर आपको नहीं मालूम है, you can watch out the video for the first chapter too, okay? Now, could you guess it? Well, let me give you one more hint. The teachers always keep saying to us, right? Keep quiet, be quiet, आवाज नहीं करना है. But हम कहाँ सुनते हैं? Well, let me tell you, it's not your fault. Humans love to talk. और तुम इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो हम भी बातें करना अच्छा लगता है, right? So that's why teacher always have to keep saying be quiet, but हम बोलते रहते हैं. Well. What I mean to say is that the first form under ancient period is oral tradition or oral recitals. Okay? Oral traditions, oral recitals. How did they help? They help us to preserve great deeds of our ancestors, mythological lore, and memories of social transitions. वो टाइम पे क्या होता था, हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया था, ये सारी चीज़ें हम ये ओरल ट्रेडिशन और ओरल रिसाइटर्स के ज़रिए प्रिजर्व कर सके हैं, राइट? To make it easy for you, let me give you one simple example. In your personal lives, आपको अपने ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कभी कुछ मालूम होता है? क्या उनके बारे में कोई किताब लिखी गई है? नहीं. कोई मूवी बनी है? नहीं. फिर भी कैसे मालूम है आपको? बिकॉज आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने उनके बच्चे यानी आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे यानी आपके पेरेंट्स को बताया, राइट? और आपके पेरेंट्स ने आपको बताया. तो ये जो 3-4 जनरेशन पहले की बातें भी आपको पता है. एंड इट्स सिंपली थ्रू ओरल ट्रेडिशन, राइट? कोई किताब, कोई मूवी नहीं है उस पर, सिर्फ ओरल ट्रेडिशन. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वो ट्रांसफर हुआ है. बस ये लॉजिक याद रखिए और आप ओरल ट्रेडिशन के बारे में आसानी से लिख सकते हैं. ओके? For inscriptions, we have Harappan artifacts and Harappan seals. Here, I reveal a very proud moment for all the Indians. Yes, the proud moment. And it is Indians had mastered the art of writing as early as 3 BCE. Yes, you heard me right, 3 BCE, or maybe even before that. Wow, our ancestors knew writing since 3 BCE. Isn't that amazing? Right? So this Harappan artifacts and Harappan seals जो है, Harappan culture का, Harappan civilization, उस पे से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है. और ये जो आर्टिफैक्ट्स है उससे ये पता चलता है कि इंडियंस को यानी हमारे ग्रेट 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 एंसेस्टर्स को 3 BCE से राइटिंग आती थी और शायद उसके पहले से भी. It's a proud moment for all of us, right? Yes, but.
Unfortunately, Harappan script is not yet successfully deciphered. Yes, that's a sad news. अभी तक हरप्पन स्क्रिप्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आई है. I wish someone does something and the script is understood. Oh, maybe you can take this as a career. Why not? Right? और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे कल्चर के बारे में उससे पता चल सकती है. Okay? And the second here is written documents in the form of inscriptions from the same time, that is around 3 BCE, from Emperor Ashoka's time. Emperor Ashoka, that reminds us of the Ashoka Chakra, right? Ashoka Chakra, हम Indians कैसा उसे बोल सकते? It's part of our national flag, right? So remember Ashoka Chakra, and you can recall this point, right? Ashoka Chakra is our pride. So knowing that Indians knew writing since 3rd BC is also a pride for us, right? So ये चक्र याद रखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा. वेल एम्परर अशोका के टाइम पे जो इंस्क्रिप्शंस होती थी वो कहाँ पे होती थी? वेयर डिड दे राइट? दे यूज्ड गैजेट्स. You thinking gadgets? Well. It's not electronic gadgets, okay? They used natural gadgets, which is natural rocks and stones. So rock. As we progress in time, 3 BCE से हम शुरू करते हैं हमारी जर्नी और आगे बढ़ते हैं अराउंड फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं. तो वो टाइम पे इंस्क्रिप्शंस के लिए अभी कॉइन्स पे या मेटल प्लेट्स पे मेटल इमेजेस कॉपर प्लेट्स ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था. Coins, copper plates, metal images, all this were used for inscriptions. Okay, so when we see these artifacts from the past, we get a lot of information. Let's do one experiment here. Can you think of the differences in the coins in the Indian currency or the similarities in them? क्या आप जो अपनी अपनी जो करेंसी है अलग अलग जो कॉइन्स है अलग अलग जो नोट्स है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसकी सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बारे में कुछ सोच सकते हो? अगर आपको और बेटर एक्सपेरिमेंट करना है तो यू मे एक्चुअली गो एंड गेट सम करेंसीज फ्रॉम द पास्ट पीरियड. जो पहले के ज़माने की करेंसीज थी, इवन इफ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल से कि वो ज़माने में कैसा दूसरा कॉन्सेप्ट था. 25 पैसे का कॉइन था, 50 पैसे का, 5 पैसे का, 1 पैसे का कॉइन था. सो इफ दे हैव इट, sit with the coins, see how they are different, how they are similar, what these coins are telling you, क्या information provide करते हैं. Okay, and if you don't have the coins, no problem, go on internet, search them. I'm sure you'll get all the images over there, right? So try and compare and see how these inscriptions on those coins, जो coins है उस पे जो inscriptions है वो हमें क्या information देते हैं. वो coins के ज़रिए वो टाइम के जो लोग थे, जो गवर्नमेंट था या जो किंगडम थी, वो क्या information convey करना चाहते थे. If you want to pause the video and conduct this experiment of comparing different coins, please go ahead. You may even want to compare coins internationally. Like दो तीन अलग अलग countries के coins भी आप compare कर सकते हो, right? So if you want, please go ahead, pause this video, compare it, and come back. I don't mind waiting for you. Okay, but do come back. Remember, I'm waiting for you. Okay? Well, I'm sure this experiment was insightful, right? क्या पता चला when you compared different coins? क्या information मिली? क्या similarities है? क्या differences है? Just to put it as simple, for example, Indian currency की अगर हम बात करते हैं, जो notes है हमारे, right? अभी काफ़ी changes आए हैं recently जो हमारी government ने उसमें changes लाए हैं, right? In terms of color, in terms of size, but there are some things that remain still, they are still there, right? For example, the picture of Mahatma Gandhi, right? It's a way to pay tribute to him because he helped us gain our independence. So that has not changed, right? So government has is talking something to us, to everybody through that currency, right? So color change कर दिया, size change कर दी, बड़ी note आ गई, but वो जो महात्मा गांधी का photo है वो अभी भी है, right? And that's our way to respect that person, the Mahatma Gandhi, जिन्होंने हमें
आज़ादी दिलाई थी, राइट? सो बेस्ड ऑन दिस डिफरेंट कॉइन्स, डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस, अगर पास्ट की बात हम करते हैं, जो फर्स्ट सेंचुरी के जो इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स, प्लेट्स, इमेजेस, वो सबको देखते हैं, तो उसमें से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, dates of after oral recitals and traditions, inscriptions, we have literature. Can you name some ancient Indian literature? एंशियंट इंडियन लिटरेचर के कोई नाम ले सकते हो आप? सोचिए सोचिए सोचिए. यस यू कैन, आई एम श्योर. यस, रामायणा, महाभारता, puranas, Jain texts, and Buddhist texts. These are our ancient Indian literature, right? Ramayana, Mahabharata, Puranas, Jain texts, and Buddhist texts. Easy to remember. Well, it also includes historical accounts by Indian authors, okay? Historical accounts by Indian authors. Travelogues by foreign travelers, right? जो travelers है वो travelogues लिखेंगे, right? So travelogues by foreign travelers and biographies. Biographies किसकी? Kings की, right? ऑफ कोर्स किंग्स थे तो उनकी बायोग्राफी लिखते थे, बड़े लोग हैं, उनकी बायोग्राफीज के लिए वो किसी को हायर कर सकते हैं या कोई उनमें लिखने का इंटरेस्ट भी दिखा सकता है, राइट? सो किंग्स बायोग्राफीज. Kings remind me of dynastic histories too. For example, so thus historiography in the ancient period had three elements. Let's progress in time from ancient to medieval period. So here we have historiography in the medieval period. So here we have Kalhana and Kashmir. K for Kalhana and K for Kashmir. Kalhana ने कश्मीर की हिस्ट्री लिखी थी. Okay, he had written the history of Kashmir. To write that history, he critically examined various sources like coins, monuments, records, local traditions, dynastic records, inscriptions, etc. So उन्होंने हिस्ट्री ऐसे ही नहीं लिख डाले थे. उन्होंने जो भी सोर्सेस अवेलेबल थे, जैसे कि कॉइन्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, या जो लोकल ट्रेडिशंस थी लोगों की, जो डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स थे, उस सबको अच्छे से स्टडी किया. उन सबको क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद कल्हाना ने कश्मीर की हिस्ट्री लिखी थी. Okay, and this was in the 12th century, and the style of writing in it is known as Raj Tarangini. Okay, Raj Tarangini. अगर आप लेटर्स काउंट करते हो राज तरंगी में तो 12 लेटर्स होते हैं, as you can see on the screen. So 12 reminds you of the 12th century. So Raj Tarangini was written in 12th century by Kalhana. और इसे अच्छे से याद रखने के लिए एक छोटा सा 2 लाइन का गाना है यहाँ पे. कल्हाना ने लिखी राज तरंगिनी, जिसमें है कश्मीर की हिस्ट्री. आप चाहे वैसा उसको गा सकते हो, स्लो, फास्ट, एंड दैट वे यू कैन रिमेंबर इट. ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ ट्राई, मे बी यू कैन हैव अ बेटर ऑप्शन, बेटर वे टू सिंग इट. कल्हाना ने लिखी राज तरंगिनी, जिसमें है कश्मीर की हिस्ट्री. ओके, समथिंग लाइक दैट. यू कैन मेक योर ओन ट्यून, सिंग इट, और वो याद रखोगे, आपको आराम से पूरा ये आप आराम से लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज अबाउट कल्हाना, जिन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री, सब डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद लिखी थी. ओके, नेक्स्ट लेट्स ट्रैवल इन प्लेस नाउ. हम कश्मीर से थोड़ा नीचे उतरते हैं और हम आ पहुंचे हैं दिल्ली, आवर कैपिटल, राइट? सो दिल्ली में अगर आप गए हो तो आपने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे जो आपको मुस्लिम रूल का याद दिलाता है, राइट? द मुगल्स वर द रूलिंग दैट टाइम. So Delhi was their capital city. So Delhi is full of Muslim architecture, the Mughal architecture. So हम कश्मीर से अभी दिल्ली जाते हैं. तो दिल्ली में मुस्लिम रूलर्स थे. तो मुस्लिम रूलर्स का इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? उन्होंने जो भी लिखा किया, और वो कहाँ से उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया था? ओके, वेयर वर दे इंस्पायर्ड फ्रॉम, और व्हाट इन्फ्लुएंस्ड देयर वर्क? ऑफ कोर्स अरबिक एंड पर्शियन, राइट? बिकॉज दे वर मुस्लिम्स. सो अरबिक और पर्शियन का इन्फ्लुएंस हमको उनके काम में दिखता है. सो
Here again we have a small little song. Let me give a try to sing it. आया दौर मुस्लिम शासन का यानी Arabic और Persian असर का. Not that great, right? But of course you can make it better. I've tried कि मैं हर एक ये चीज़ों के लिए ऐसा कुछ दो लाइनर्स बनाऊं ताकि आप वो दो लाइनर्स सॉन्ग की तरह याद रखें और आप पूरा उसके बारे में easily लिख सकते हो. Just remember Delhi and of course Muslim rule, Mughals, Arabic and Persian influence वहाँ पे होएगा, right? Okay, let's proceed. So next on the list we have Ziauddin Barani. He has written a book called Tariq-e-Firuz Shahi. Okay, Ziauddin Barani, Tariq-e-Firuz Shahi. So, what is this book about? In this book, he has stated the purpose of historiography. We all know from the first chapter, right? First chapter में हमने बहुत बार पढ़ा कि historiography क्या होना चाहिए. Just knowing about the great things that a king has done. किंग ने जो रूलर थे उन्होंने जो बड़ी ही चीज़ें करी है, उनकी जो जीत है और जो अच्छी चीज़ें हैं वही सिर्फ लिखना इज़ नॉट इनफ, राइट. उनके फेलियर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, उनकी जो इनअप्रोप्रिएट पॉलिसीज थी, इनकरेक्ट पॉलिसीज थी, उनको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, राइट. एंड उसके साथ साथ द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द वाइज, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो महान आत्माएं हैं, जिनके पास वो ज्ञान है, दैट नॉलेज है, उन्होंने सोसाइटी को क्या सिखाया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों पे, पूरे कल्चर पे, ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, राइट. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर. Only including the good things is not going to give us the holistic picture, right? To get the holistic picture, you need to include everything about the king, his failures too, about the other people, those because wise log hai, jo saints hai, उनका भी एक impact होता है. They have a respect, they have a status in society, right? People listen to them. So उनकी क्या teachings थी, उनकी teachings का क्या असर हुआ? It's important to know that as well. एंड जो ज़ियाउद्दीन बरानी थे उनका मानना भी था कि ये सारी चीज़ें का होना ज़रूरी है, हिस्टोरियोग्राफी के अंदर ये सारी चीज़ें होना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ ही एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. सो हिस्टोरियोग्राफी अभी छोटी सी चीज़ नहीं है खाली किंग के बारे में, बट it's a big thing about many more things. So expanded the scope of historiography. Okay, so how are we going to remember? Here comes those two lines. Ziauddin ने लिखी तारीख़ फिर शाही. जियाउद्दीन ने लिखी तारीख़ फिर शाही और एक्सपांड कर दिया स्कोप हिस्टोरियोग्राफी. वाह 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 वाह, right? So expand कर दिया. When you know expand कर दिया, what you have to write? You have to write that king से बढ़ के भी history में होना चाहिए. You have to include other people as well. So this is how you can remember this section for Ziauddin Barani Taruki Firuz Shahi. Okay, how we expanded the scope of historiography. So let's move further. Now here we have something interesting. ये जो Mughal historians say they are going a step further. How? What are they doing? Let us find out. So this historians, Mughal historians, अभी सिर्फ plain essay format में नहीं लिख रहे, okay? They're not just writing essay like as you have in English, Hindi, and those subjects, right? Essay writing. So they're not just doing essay writing, just like sentence by sentence by sentence, paragraph after paragraph, but they're making their text more interesting. And how are they doing it? By adding suitable poetic quotes. उन लोग बीच बीच में छोटी छोटी पोएट्रीज भी अभी डालना शुरू किए हैं. Sounds like a Bollywood movie, right? एक मूवी चल रही है, डायलॉग चल रहे, फिर गाना आ रहा है, फिर डायलॉग चल रही है, फिर गाना आ रहा है. Just a thought, okay? And also they started having beautiful pictures. अभी उन्होंने even pictures को भी include करना शुरू किया है. So why do you think they were doing all this? Of course to praise the emperors. जो भी उनके emperors थे उनकी तारीफ करने के लिए. Of course if your emperor is happy, you know you'll get more from them, right? तुम्हारा reward बड़ा होगा. So to praise the emperors, so to show
देयर लॉयल्टी, वो अपनी लॉयल्टी एम्परर को थ्रू दिस फॉर्मेट दिखा रहे थे, राइट, दैट वी आर लॉयल टू यू, वी आर प्रेजिंग यू, हम आपकी शान में अभी पोएट्रीज भी लिख रहे हैं, आपकी शान में अभी पिक्चर्स भी बना रहे हैं. सो टू प्रेज द एम्परर्स एंड टू show their exhibit, yeah, show their loyalty. Okay, and the two liners for this is देखो ये poems और photography, देखो ये poems और photography, देखते हैं कुछ biography. वाह वाह, आप बोल सकते हो वाह वाह. Okay, I can hear you, thank you. So let's meet the Mughal Emperor Babur. ओके, सो मुगल एम्परर बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है. रिमेंबर, इट इज ऑटोबायोग्राफी, इट्स नॉट बायोग्राफी, राइट, एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजु के बाबरी, तुजुके बाबरी. When you have this words, say along with me, okay, मेरे साथ में आप उसे बोले तो आपको जल्दी से याद रहेगा. सो बाबर एम्परर ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम है तुजुके बाबरी. बाबर हैज रिटन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड तुजुके बाबरी. सो व्हाट यू थिंक हिज ऑटोबायोग्राफी वुड बी अबाउट? आपको क्या लगता है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा होगा? Of course, first thing comes battles, right? Because emperors in those days had so many battles. तो उन्होंने अपनी battles के बारे में उसमें लिखा है. At the same time, he was very smart. What did he do? उन्होंने जो places travel किए थे, okay, wherever he traveled, various different places that he traveled, he described them minutely. He described very minutely all the places that he had traveled. I would say various places, okay? So जो अलग अलग जगह पे वो गए थे वो सारी जगहों का उन्होंने बहुत ही बारीकी से एकदम माइन्यूटली डिस्क्रिप्शन लिखा है. लाइक वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ का कस्टम्स कैसा है, वहाँ के फ्लोरा कैसा है, वहाँ पे फार्मिंग कैसी है, and many such things in detail. Why do you think he must have done this? He's an emperor, right? Hmm? He is very smart, right? Because he thought that this could be a good guide for the kingdom and the future emperors for expansion and battles, right? अगर हमको आजू बाजू की सब जगहों के बारे में इतनी माइन्यूट इंफॉर्मेशन है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे हमको अपना एम्पायर एक्सपांड करना है कि नहीं करना है, राइट? अगर अगर फ्यूचर में उधर बैटल्स होती है तो हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो जगह के बारे में ऑलरेडी हमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन है. So he was very smart so that his empire knows, and even his future emperors जो है उनके बाद में जो एम्परर बने उनके पास भी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो ताकि अपना एम्पायर एक्सपांड करना इजी है और बैटल्स में स्ट्रेटजीज बनाना भी इजी हो जाएगा, राइट? सो हियर आर आवर टू लाइनर्स. शहनशाह बाबर ने लिखी तुजु के बाबरी, शहनशाह बाबर ने लिखी तुजु के बाबरी, लगते जैसे सिटीज और रीजन्स के खबरी, लगते जैसे cities और regions के खबरी. That's what he was doing, right? In his autobiography. सब information दे थे खबरी के जैसा कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वहाँ ये है, right? So this is how you have to remember information. You don't have to learn each and everything. Be smart. Make such things. Make things that helps you remember. Draw things if that helps you remember. Make songs if that helps you remember. Make stories. Whatever helps you remember, do that. Okay? And I'll try my best in all my videos to come up with such ideas, such things, so that history becomes fun, history becomes easy, and it's happy history. Yep, yeah, okay, let's move on. Okay, so now let's take an example of biography. As you can see that it's written by Abul Fazl, okay, and it's for the Emperor Akbar, Akbar Nama, right? So Akbar, राइट. सो अम्परर अकबर के लिए है, उनकी बायोग्राफी है और लिखा है किसने? अबुल फजल ने. ओके, अकबर अबुल फजल. सो अबुल फजल ने जब ये बायोग्राफी लिखे, सो हाउ डिड ही राइट इट डाउन?
He opted for authentic historical documents and their scrutiny. यानी उन्होंने रैंडम कोई भी सोर्सेस नहीं उठाए हैं, only authentic historical documents, right? And we have studied about the authenticity in first chapter, how historians ensure that they have the authentic resources, right? जो lettering style से paper है, date है, etc. those parameters. So अबुल फजल ने make sure किया कि वो कोई भी random resources नहीं ले रहे, but he is using only authentic historical documents and he scrutinized them, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की कि भाई ये सही documents है, इनका use हो सकता है. Okay, and therefore his accounts are considered bias free and of course therefore realistic, यानी कि उनके accounts जो है वो biased नहीं है. Okay, biased is like you take a stand and say for example आपको कोई पसंद है और आप उनके बारे में लिखते हो तो आप सिर्फ अच्छा 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 ही लिखोगे, so that shows your bias. उनकी बुराई के बारे में जो उनकी जो नेगेटिव्स है या उनके अंदर जो खामियां है वो आप इंक्लूड ही नहीं करते हो. या अदर वे कुड बी द अदर एग्जांपल, आपको कोई पसंद ही नहीं है तो आप सिर्फ उसकी बुराई पे बुराई किए जा रहे हो, उसमें इतनी सारी अच्छाई है वो देखते ही नहीं हो, सो यू आर बायस्ड इन योर ओपिनियन. बट हियर because he referred authentic historical resources and he scrutinized them well, it is said that his accounts are bias free and therefore realistic. Okay, so the two liners are अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा जो है बायस फ्री हमने माना. अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा जो है बायस फ्री हमने माना. ओह गुड, थैंक यू. अभी हम दिल्ली से थोड़ा और नीचे आएंगे और पहुंचे इधर हम महाराष्ट्र में. सो व्हाट डू वी हैव हियर? बकर. बकर आर द यूलॉजिस्ट. आपने ये इंग्लिश में पढ़ा होगा, राइट? व्हाट इज बकर? आई मीन बकर नहीं पढ़ा है बट यूलॉजिस्ट पढ़ा है, राइट? जो प्रेज राइटिंग्स है जिसके अंदर तारीफ करने में आती है. सो किसकी तारीफ करते होंगे? heroes की, stories of historical events, battles, lives of great men, right? So all these different topics are part of it. Okay, so इन्होंने जो महान heroes हो चुके, when I say hero I don't mean to say Bollywood heroes, okay, I mean to say the heroes in our history, right? तो उनके बारे में या जो historical events है उसके बारे में, battles जो बड़े लोग हो चुके उनकी बारे में बखर लिखने में आती है, उनकी तारीफ करने में आती है. So what does बखर include basically? Biographies of kings, autobiographies, dynastic history, events, mythologies, etc. Okay, so now we are here in Maharashtra talking about बखर जो प्रेज राइटिंग्स है, जो शान में किसी के शान में लिखी जाती है, किसी की तारीफ की जाती है उसके अंदर, राइट? सो इट कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स. Like it can be biographies, autobiographies. It's about the stories of the historical events, mythologies, etc. Are we clear with it? Yes. Okay. So here we deal directly with the two liners. So first we have is शबासत बखर लिखे कृष्णा जी आनंद शबासत जो बताते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पद. ओके, शबासत बखर लिखे कृष्णा जी आनंद सभासद जो बताते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पद. ओके, सो जो बुक है बखर जो है उसका नाम क्या है? शभासद. लिखा किसने? कृष्णा जी अनंत शभासद ने. उनके नाम में भी शभासद आता है, राइट? तो उनकी बुक जो बखर थी उसका नाम था शभासद. और क्या लिखे उसमें उन्होंने? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उसके लिखे हैं उनकी बखर के अंदर, राइट? सो उनका क्या स्टेटस है, हु इज ही, एंड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज in the history of Maharashtra, right? You have studied a lot about Chhatrapati Shivaji Maharaj. तो उनकी बखर उनकी praise writings है basically. Do you know the famous Battle of Panipat? Of course you know it, right? Everyone knows about it. So there is a बखर for it too. ये जो battle है उसके लिए भी एक बखर है जिसका नाम है बाऊ साहेबांसी बखर, और उसे पानीपताची बखर भी कहते हैं. So the two liners for this we have is भाऊ साहेबांची बखर या पानीपताची बखर. भाऊ साहेबांची बखर या पानीपताची बखर.
देत आहे जंगे पानीपत ची खबर, राइट? वो हमें पानीपत बैटल के बारे में सब इंफॉर्मेशन दे रही है, उसके बारे में सब खबर दे रही है, राइट? So these are the two liners. Last on the list is Holkaranchi Kaifiyat, which gives us the information about the contributions of Holkars to the Maratha rule. Okay, so Holkaranchi Kaifiyat जो है वो हमें मराठा रूल जो था उसमें होलकर लोग जो थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो बताते हैं. ओके, सो होलकरांची कैफियत, राइट, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द होलकर्स, एंड ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र, द मराठा रूल. सो द टू लाइनर्स इज, आइए होलकरांची कैफियत देखें. आइए होलकरां की कैफियत देखें जो मराठे राज्य में होलकर का योगदान लिखे. लिखे इन द सेंस ऑफ इट शोज, इट हैज रिटन, ओके, लिखा हुआ है. सो आइए होलकरां की कैफियत देखें जो मराठा राज्य में होलकर का योगदान लिखे. Yes, so just these three different sections here. Remember the 6 lines, and you can write enough to get good marks in your exams. Okay. Let's progress in time from medieval period to modern period. Yes. The modern period includes all British scholars writing Indian history or contributed in archaeological work. So modern period में हम British scholars के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिखी है या जो आर्कियोलॉजिकल वर्क हुआ था उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है. ओके, so how about having an interview with them? Wow, I am so excited. Are you? Yes, you too, right? So let's get going and have interview with some of them. Ladies and gentlemen, today we have Sir Alexander Kenhingham with us. So join me in welcoming Sir Alexander Kenhingham. Sir, tell me, what was your designation? I was the first Director General of the Archaeological Survey in India. Wow, you were the first Director General of the Archaeological Survey in India. That's amazing. Could you tell me what sites did you prefer? I mainly chose the sites mentioned in the Buddhist texts. Oh, you mainly chose the sites mentioned in the Buddhist texts. I thank you, Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey in India, who mainly chose the sites mentioned in the Buddhist text. Here we end the show. Ladies and gentlemen, today we have Sir John Marshall with us. हाँ, मुझे डर लगता है कहीं ये मेरा कोर्ट मार्शल ना कर दे. ओ सर जॉन मार्शल, मेरा कोर्ट मार्शल मत कर देना. अच्छा, इनको हिंदी नहीं समझ में आ रही है. Okay, Sir John Marshall, what is your contribution? The Harappan civilization was discovered during my tenure. Wow, Sir John Marshall. That's great. That's interesting. You helped us discover Harappan civilization. Thank you very much for that. Okay, let us now meet some British writers. Hey, James Bond. Oops. My bad. James Mail. I know you have written 3 volumes of the Indian history, right? So that's the history of British India basically. So आपकी book का नाम है The History of British India and you have 3 volumes. देखा कैसा नाम रखा है? History of British India. इंडिया नहीं, ब्रिटिश इंडिया. ओके, ठीक है, माफ कर दिया, जाने दो. आपने 3 वॉल्यूम्स लिखे हैं or you were the first British writer to write about Indian history. That's impressive. But, let me tell you that your writing was biased. It reflects an absence of objective perspective and is prejudiced towards Indian culture. You should have been careful
आपने बहुत बाइस्ड राइटिंग की है। आपकी राइटिंग में से पता चलता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं था और आप काफ़ी प्रेजुडाइज्ड थे इंडियन कल्चर को लेकर। Bad, bad. You should have written unbiased, okay? And the absence of objective perspective is not accepted. And being prejudiced towards Indian culture? No way, we're not going to accept that, James Mill. Okay? So, we won't give you any award. Clear? Hmm. Next station, Elphinstone Road. Oops, what am I doing? Looks like I'm in the train. My bad again, I'm sorry. I mean, next historian is Mount Stuart Elphinstone. Mount Stuart Elphinstone. Well, I keep doing those funny things in between to help you remember, okay? So keep those things in mind. Okay, so what's so special about this man? So he was the governor of Mumbai. So एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है तो वो मुंबई में है, तो आपको इनके नाम से वो याद रह जाना चाहिए कि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन was the governor of Mumbai and he published a book titled The History of India. लगता है इन्होंने मेरी बात सुन ली. James Mill had written the history of British India and we said we don't want that, and look, he's writing the history of India, so it's no more British India, but is writing the book titled The History of India. Okay? James Mill and Mount Stuart Elphinstone wrote about India. But didn't we have somebody writing about the dynastic powers? Who? Grand. Oops, oops, oops. Something is wrong with me today. क्या हो रहा है? मैं कुछ गलत गलत ही नाम ले रही हूँ. I have been saying wrong names. That's bad. It's not Grant, but it's Grant Duff. Okay? So we have Grant Duff. So what did he do? Well, he wrote 3 volumes covering the history of the Marathas, and his book is titled A History of Marathas. History of Marathas, 3 volume. Okay? But unfortunately, it is a biased version condemning Indian culture and history. इतनी ही प्रॉब्लम्स थी तो आए ही क्यों हमारे वतन इंडिया? आए तो आए पर सालों तक रुक भी गए. Too bad. Too bad. सावधान कलोनियल तोड़ पधार रहे हैं with his writings about Rajasthan's history. But again, some biasness. क्या यार, सब लिख रहे बट बायसनेस के साथ. अरे यार, कोई तो कुछ करो, इस बायस के कीड़े को खत्म करो, इसका शिकार करो. शिकार शिकार मीनिंग हंटिंग. हंटिंग कौन करेगा? हंटिंग तो हंटर ही करेगा. So let's meet William Wilson Hunter. William Wilson Hunter, who wrote 2 volumes on Indian history. Not completely bias free, but somewhat impartial treatment of the subject. ठीक है, थोड़ा तो बदलाव आया. So he has written 2 volumes on Indian history. It's not completely bias free, but to some extent he has been impartial, which is good. So Hunter ने आखिर biasness के कीड़े का शिकार तो किया, थोड़ा ही सही, but किया तो सही, right? So Mr. William Wilson Hunter, thank you. You must be thinking that Indian writers should do something about it, right? Even I am thinking so. कितनी मिलती है हमारी सोच ना? काफी मिलती है. So here comes 2 brave writers, Nikant Janardhan Kirtane and Vishwanath Kashinath Rajwade. So let's just try to have some logic to remember their names, okay? निकंद, कंठ, आप हिंदी में पढ़े होंगे, राइट? कंठ जो आवाज को हम बोलते हैं, राइट? निकंठ. और कीर्ताने, कीर्तन भगत, पूजा भक्ति जो करते हैं उसमें कीर्तन बोलते हैं हम, राइट? भजन कीर्तन करना. सो कंठ से हम कीर्तन करेंगे, राइट? सो निकंठ जनार्दन कीर्ताने. ठीक है, निकंठ जनार्दन कीर्ताने. और जो दूसरे हैं
विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, क्या नाम है, एकदम ऐसा बड़ा लगता है, राइट। विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, जो नाथ है, जो जनरली हम भगवान को रेफर कभी करते हैं, नाथ हमारे, राइट। सो जो करता धरता होता है, जो हमारा अच्छा करता है, राइट। तो ये जो दो है अभी कुछ अच्छा करने आए हैं, सो नाथ, ओके। और विश्वनाथ हमारी भारत की जो दुनिया है, पूरा विश्व नहीं, हम भारत का विश्व की बात कर रहे हैं, सो विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, ओके। सो निकंद जनार्दन कीर्ताने और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े. So these two authors took upon the task of exposing the limitations of Grant Tuff's writings. Okay, Grant Tuff's writing को expose करने की उनके जो limitations है, वो लोगों तक वो limitations पहुंचाने की जिम्मेवारी ली है. They've taken up this challenge. They are going to expose the limitations in these writings. Okay, here is a challenge for you. What did Krantaf write about? Do you remember? We just did it a few minutes ago. Yes, yes, come on, you know it. You can. Remember, come on, come on. Yes. He wrote biased histories of the Marathas. 3 volume लिख दिए, but biased volumes, right? So these two authors took up the task of exposing those limitations. So Jai Ho Nikand Janardhan Kirtane और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े की यह है. So, these were the 3 phases for tradition of Indian historiography. Historiography in the ancient period, जिसके अंदर oral recitals, inscriptions और literature की हमने बात की. Then we had historiography in the medieval period, जिसके अंदर we talked about Indian writers, Raj Tarangini, biographies, autobiographies, Bakar, where we had those 2-liners to remember, right? And finally, we had हिस्टोरियोग्राफी इन दी मॉडर्न पीरियड, जहाँ पे हमने अभी ब्रिटिश राइटर्स की बात की जो बायस्ड और प्रिजुडाइज्ड थे, राइट, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एक बायस तरीके से, प्रिजुडाइज्ड तरीके से प्रेजेंट किया था. बट देन वी हैड सम इंडियंस हु टुक अप सम चैलेंज टू expose those limitations, right? So this is the end of the first section. If you wish to take a small break, do feel free, but come back and continue with the rest of the video. Do remember to subscribe so that you get notification when we upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it. Woohoo! We've completed the first section already and we are ready to rock and roll with the second section titled Indian Historiography, Various Ideological Frameworks. So are you ready for it? Let's go! As you can see on the screen, this has various subsections like colonial historiography, orientalist historiography, nationalistic historiography, historiography in the post-independence era, Marxist history, subaltern history, and feminist history. So the 7 subsections. Let's understand each one of them in depth. First is colonial historiography. I'm sure colonial वर्ड सुन के आपने already guess कर लिया होगा कि इस section में क्या होगा. So let's dive deeper into this section. Okay, so as you have already guessed, in this section we will see कि ये time पे British officers or Christian missionaries, these are the Christian missionaries who were appointed by the British at that time. Okay, so their objective was to write Indian history but not unbiased. So this British officers, ये जो British officers थे और वो टाइम के जो Christian missionaries थे, वो Indian history लिख रहे थे but वो काफ़ी biased थी और काफ़ी prejudiced थी. They ridiculed Indian culture. ओके, उन्होंने इंडियन कल्चर को काफ़ी नीचा दिखाया था. दे ridiculed it and they also justified British rule in India. Amazing, yeah? They come, they rule us, and now they're saying why should British rule India? अरे वाह, ये क्या बात हुई? कैसे उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं भाई, ब्रिटिश बराबर है, यहाँ पे उन्होंने रूल करना ही चाहिए. So this is what they were trying to do while they were writing
history. One of the examples, as you can see on the screen, is Cambridge History of India. Cambridge, you all know it's a city in United Kingdom. It's also a university, right? It's a very good university. Should you wish to study there, you can consider this as an option. So Cambridge History of India was published from 1922 to 1937. Okay, 1922 to 1937, 15 साल. Okay, and it has 5 volumes. अभी हम 2022 में है, right? So this book was written almost 100 years ago, 1922. Just it's easy for you to remember. But remember, you have exams next year in 2023. So don't write 1923. Be careful, okay? It's 1922. Okay, so this is how you can remember easily that British officers and Christian missionaries of that time, who were appointed by the British, were writing about Indian history, but very biased, very prejudiced, ridiculing Indian culture, and also justifying the British rule here in India. And one of the examples is Cambridge History of India. Okay. Next, we have is Orientalist historiography. Let us find out more about who these Orientalists are. Wow. So here the Orientalists are the European scholars who were curious about the civilizations and countries of the East. Isn't it amazing? They are European scholars, वो Europeans है, okay? But they are not prejudiced or something like that. In fact, they're very curious. वो ईस्टर्न कंट्रीज की सिविलाइजेशंस के बारे में, सब कंट्रीज के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है. They are very curious. And also, they have admiration and respect for the Eastern culture. Finally, right? So they have admiration and respect for the Eastern culture. So it's not that they are prejudiced or something like that, but they respect it. They have admiration. को अच्छा लगता है कि respect है. So basically, these Orientalists were the European scholars, but without biasness and prejudice. Finally, thank God, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और Orientalists को भेज दिया. I'm so eager to know their work, aren't you? So, this Orientalist studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. Interesting. Okay, so ये Orientalist क्या कर रहे थे? वो संस्कृत जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है, राइट? जो हमारे पुराने जो बुक्स है, जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, संस्कृत में है, राइट? सो संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है, सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, कोई समानता है कि नहीं, वो स्टडी कर रहे थे. ओके, एंड व्हाट डिड दे फोकस ऑन? दे फोकस्ड ऑन वैदिक tradition and Sanskrit literature for this. That's interesting, right? So they are now going in depth. वो इंडियन हिस्ट्री में और अंदर जा रहे हैं और हमारी जो वैदिक ट्रेडिशन है, हमारा जो संस्कृत लिटरेचर है, उसकी वो स्टडीज कर रहे हैं. And this motivates me to learn Sanskrit. क्या आपको भी लगता है कि अभी हमें संस्कृत सीखना चाहिए? वाह, मुझे तो लग रहा है. Let's find out what was the outcome of their studies. What did they find from this study of comparing Sanskrit and some European languages? Can you guess? कुछ लगता है आपको क्या होगा? क्या उनको मिला होगा? Well, their studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be the mother language of all Indo-European languages. Okay, so they studied and it resulted in formulating a notion. हो सकता है, okay, it's formulating a notion of an ancient language. ये जो एंशंट लैंग्वेज है वो बाकी सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है उसकी मदर, यानी ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल दिस इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है
वो एक मेन लैंग्वेज में से डिराइव हुई है. सो देयर इज अ वन लैंग्वेज which is a mother. Okay, so like mother gives birth, right? So उसमें से बाकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है वो मेन लैंग्वेज जो है, वो जो मदर लैंग्वेज है, वो जो एक बहुत पुरानी एक एंशंट लैंग्वेज है, उसमें से ये सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आई हो सकती है. सो दैट इज व्हाट इट रिजल्टेड इनटू, राइट? Okay, let's find out more about Orientalists further. Okay, क्या आपने एशियाटिक सोसाइटी के बारे में सुना है? Yes, Asiatic Society is in Kolkata. Okay, and it was established by, or it was founded by Sir William Jones in 1784. Okay, so it is in Calcutta, and उनको establish करने वाले कौन थे? Sir William in 1784. Fine. What purpose would this society serve? क्या लगता है ये चालू करने के लिए क्या मकसद होगा? Why do you think Sir William founded this society, this Asiatic society? Well, it opened the doors for research in ancient Indian literature and history. Okay, now the हमारी जो पुरानी जो history है, हमारा जो Indian literature है, ancient Indian literature. So we are not talking about something in like 17th, 18th, 19th century, but we're talking about the ancient Indian literature. Okay, so it opened the doors. Basically, because ये society बनाने में आई थी, उसकी वजह से अभी जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है, इंडियन हिस्ट्री है, उस पर रिसर्च करना अभी पॉसिबल था. सो इट ओपनड अ वे, इट क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी to study Indian literature and history. Okay? Here, Orientalist scholar Friedrich Max Muller deserves a special mention. Why? Looks like he was the master and lover of Sanskrit. ओके, ऐसा लगता है कि वो संस्कृत के मास्टर भी थे और संस्कृत से उनको काफी लगाव था. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European languages. This is his opinion, okay? Sir Max Muller का opinion है कि संस्कृत जो है वो सबसे ancient language है और वो इंडो यूरोपियन की सबसे एंशियंट लैंग्वेजेस में से है. आई फील लाइक स्टार्टिंग माय संस्कृत लैंग्वेज क्लासेस राइट अवे. मुझे भी संस्कृत सीखने का बहुत मन हो रहा है इनकी सबकी बातें सुन के. मेरे हाथ भी कुछ अपना इंडियन लिटरेचर में से, अपनी इंडियन हिस्ट्री में से खजाना मिल जाएगा ऐसा लगता है. आई जस्ट फील लाइक डूइंग माय संस्कृत क्लासेस. ओके, व्हाट एल्स डिड ही डू? मैक्स मुलर ने और क्या क्या किया है? So here are some of his major contributions. He translated the Sanskrit text of Hitopadesh. Okay, जो हितोपदेश जो टेक्स्ट है संस्कृत में थी, उनका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है. So he is really a master, right? We just saw that he was a master, a lover of Sanskrit. So he translated Hitopadesh. Also, he is the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. कितना अच्छा नाम है ना, the sacred books of the East. So he is also the editor of the 50 volumes of the sacred books of the East. Okay, 50 volumes. Wow. And he also compiled Rig Veda, published in 6 volumes. He translated Rig Veda into which language? German. Okay, so Rig Veda को भी उन्होंने translate किया है. So here are two translations, right? एक हितोपदेश है और एक Rig Veda है. So Rig Veda is basically he compiled it and published into 6 volumes and translated it into German. And he was also the editor of the 50 volumes of the sacred books of the East. Okay, so looks like he was a very, very hard-working man. That's good for us, right? Finally, हमारा जो है इंडियन हिस्ट्री जो है, इंडियन लिटरेचर है, जो उसकी रिचनेस है,
वो बाहर आ रही है, right? So no more biasness, no more ridiculing, and no more prejudice. Going to the sources and getting that rich resources out there. Now, let us also know another famous Orientalist, Edward Said. Edward Said, who had re-evaluated the Orientalist writings, okay, so Orientalist writings जो थी उसको उन्होंने re-evaluate किया, उसको वापस से evaluate किया, and has also thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars. Okay, so this is Edward Said here. Quite simple, right? But this was very interesting section because now we are actually going to the source of our Indian history. Wow, bravo, man, bravo. Well, after colonial and Orientalist historiography, here we are with the nationalistic historiography. और मुझे पता है कि आप ऑलरेडी सोचने लगे हो कि इसके अंदर क्या होगा. So let's find it out. So, as the name suggests, nationalistic historiography, it is by our own people. Yes, by the Indians. Finally, we have something by the Indian scholars. These are the Indian historians writing our history now. Yeah, they were no doubt trained in the British educational system. Okay, उनकी training British educational system में हुई थी. But they always showed an inclination to restore the pride in the ancient glory of India. Okay, भले उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में अपना एजुकेशन लिया है, but they always were inclined towards Indian history. Okay, so they wanted to restore the pride. जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, जो एंशियंट ग्लोरी है, उसके अंदर हमारी जो प्राइड है वो वापस आने के लिए उसको रिस्टोर करना एक उनका मकसद था. Also, they wanted to restore the self-esteem of the Indian readers, right? जो इंडियन रीडर्स थे अभी उनके पास जो दूसरा वर्जन है वो आ रहा था. जब तक इंडियन रीडर्स अगर ब्रिटिश वर्जन पढ़ रहे थे जिसके अंदर इंडियन को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, तो हमारी सेल्फ एस्टीम को वो असर कर रहा था, राइट? इट वाज अफेक्टिंग अस नेगेटिवली. बट जब हमारी एंशियंट हिस्ट्री को रिपीट किया जाता है, आज जब आप पढ़ते हो कि किस तरह से हमने आज़ादी ली थी, किस तरह से हमारे जो वो ज़माने के नेशनल हीरोज़ थे वो लड़ते थे, इंडिया एक साथ आके अपनी फ्रीडम के लिए लड़ा था. It makes you feel happy, it makes you feel proud, right? You feel, I'm so proud to be an Indian, right? So this is what the scholars were trying, अपनी ancient history को वापस लाके लोगों के अंदर वो self esteem जगा रहे थे. They wanted to restore the self esteem of the readers because लिख के जो पढ़ते हैं, when we read the history it impacts. Okay, so the language, the content affects us. So these scholars were trying to not only restore the pride in the ancient glory of India but also restore the self-esteem of the Indian readers. At the same time, they also were trying to seek the golden era of Indian history. राइट, इंडियन हिस्ट्री वी हैड अमेजिंग हिस्ट्री, हमारा भी एक अमेजिंग पास्ट था. सिर्फ पास्ट ब्रिटिश इंडिया नहीं है, उसके पहले का देयर वाज अ रीजन व्हाई ब्रिटिश केम टू इंडिया, राइट? सो हमारी जो एंशियंट ग्लोरी है, हमारा जो गोल्डन एरा था, हम बोलते थे इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया थी, राइट? इट वाज सच अ पावरफुल कंट्री, इट वाज सो डाइवर्स, सो रिच इन ऑल द वेज. सो ये जो हमारा गोल्डन एरा है उसको वापस लोगों को याद दिलाना, उसको वापस से लोगों के अंदर जगाना, वो भी उनका एक मकसद था. However, at times they are blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. उनको ब्लेम करते हैं कि उन्होंने कभी कभी हिस्ट्री को क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया है. क्या भाई, क्या, क्यों 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 ऐसा कर रहे हो? Well, never mind. Let us now know some of the renowned scholars of this time. Mahadev Govind Ranade, Ram Krishna Gopal Bhandarkar, Vinayak Damodar Savarkar, Rajendra Lal Mishra, Ramesh Chandra Majumdar,
काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी, अनंत सदाशिव अल्तेकर। ओके, यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं और ये बहुत सारे नाम याद रखना मुश्किल हो सकता है, राइट? And I'm sure they're not going to ask you to list down all the names, but let's try and remember some of the names, okay? थोड़ा हम लॉजिक, थोड़ा कुछ स्टोरी क्रिएट करते हैं और इसमें से थोड़े बहुत नाम याद करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि महादेव गोविंद रानडे, वे महादेव, देवों के देव महादेव, राइट? और एक देव का नाम गोविंद है, राइट? महादेव गोविंद। और यहाँ पे बहुत सारे आप नाम देखो तो बहुत सारे ऐसे भगवान के नाम पे से ही नाम है, तो आपको नाम याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट? तो राम कृष्णा गोपाल, राम भी है कृष्णा भी है और कृष्णा को गोपाल भी कहते हैं, राइट? सो राम कृष्णा गोपाल। ओके, फिर कौन सा नाम याद रखेंगे हम लोग? जैसे कि वासुदेव विष्णु मीराशे, तो वासुदेव भी भगवान का नाम है, विष्णु भी है, राइट? सो वासुदेव विष्णु दोनों वी पे से है, सो मीराशे उसके बाद। ओके, फिर क्या याद करेंगे? ओके, नेक्स्ट है काशी प्रसाद जायसवाल। तो काशी जब जाते हैं, जब यात्रा के लिए लोग जाते हैं, राइट, वहाँ पे प्रेयर्स के लिए जाते हैं, तो वहां से क्या लेके आते हैं? प्रसाद लेके आते हैं। तो काशी प्रसाद जायसवाल। फिर है भगवान लाल इंद्र जी, भी भगवान है और इंद्र जी भगवान इंद्र है, राइट? सो भगवान लाल इंद्र जी हो गया वहां पे। फिर जो दूसरा है राधा कुमुद मुखर्जी, अभी ये राधा जो कृष्णा राधे कृष्णा हम बोलते, राइट? सो उस पे से आप याद रख सकते हो, या वहां से। और एक दूसरा ये भी हो सकता है कि रानी मुखर्जी, तो रानी नहीं, ये राधा है, आर पे से ही है, सो समथिंग लाइक दैट। सो इस तरह से आप एटलीस्ट 5-6 नाम तो इजीली याद रख ही सकते हो। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, और आप भी अपना कुछ बना के ये नाम को याद रख सकते हो, कुछ स्टोरीज बना के। Cool? Yes. Now let us engage in detail with one of the scholars here, V.K. Rajwade. He inspired nationalistic writings in Maharashtra, who also criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers. Okay, so इन्होंने, जो हम कब से बोल रहे हैं, राइट, कि ये जो हमारी हिस्ट्री लिख रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो प्रेजुडाइज्ड है, so he criticized, he was against it, which is so true, right? So let's see the work of Rajwade in detail. उन्होंने क्या काम किया है? So first thing, he believed that we should write our own history. सही है, राइट? हमें खुद को हमारी हिस्ट्री लिखनी है, तब जाके हम उसके अंदर कुछ सच्चाई ला सकते हैं। वो प्रेजुडाइज्ड नहीं होंगी, बट वी विल प्रेजेंट इट इन अ वे दैट इट रिस्टोर्स द प्राइड, हमारा जो गर्व है उसको वापस जगा सके, ना कि हमको नीचा दिखा है। सो उनका ये स्ट्रांगली मानना था कि हमें खुद, यानी हम इंडियंस को खुद को हमारी हिस्ट्री लिखनी है, राइट? सो डिड ही जस्ट बिलीव दिस और डिड ही डू समथिंग अबाउट इट? Well, he wrote history and also wrote on other subjects like grammar, linguistics, etc. Okay? सो खाली बोल नहीं दिए, उन्होंने उस पर काम भी किया और उन्होंने काफ़ी लिखा भी है। हिस्ट्री में भी लिखा है, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स है, ग्रामर है, लिंग्विस्टिक्स है, ये सारी चीज़ों पे भी उन्होंने लिखा है। ओके, एंड ही रोट इन मराठी, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र and is writing in Marathi, right? The local language. Okay. Also, he insisted that history should be written only using the authentic documentary sources. हमने काफ़ी इसके बारे में देखा है कि authentic sources का होना कितना ज़रूरी है, तो उनका भी मानना था। he in fact insisted, उन्होंने उस पर काफ़ी जोर दिया है कि जो हिस्ट्री लिखते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से ही लिखनी चाहिए, यहाँ वहाँ से नहीं, बल्कि only authentic documentary sources. Okay, and he also stated that history is the all-inclusive image of the past societies, right? Not just about selected section के, हाँ हमने कोई किंग की जीत के बारे में लिख दिया है, किंग की खाली तारीफ की और something like that, but he's saying that it should be all inclusive. हर एक एस्पेक्ट को रखना जरूरी है, तो ही आपको कंप्लीट पिक्चर, एक होलिस्टिक पिक्चर मिलेगा, राइट?
And finally, we have here is he compiled and edited and also wrote prefaces to 22 volumes of, okay, 22 volumes. So उन्होंने कंपाइल किया, एडिट किया, और वो जो बुक्स है उसके जो प्रेफेस होते हैं, आप जब कोई बुक पढ़ते हो तो बिगनिंग में एक प्रेफेस होता है, राइट? सो वो भी उन्होंने लिखा है. सो टोटल 22 वॉल्यूम्स के लिए. और ये टाइटल क्या था? मराठ्यांच्या इतिहासची साधने. He's Maharashtrian, right? So मराठ्यांच्या इतिहासची साधने. Wow. Okay, so 22 volumes compiled, edited, and also wrote prefaces to them. That's a lot, right? So he had an opinion and he worked for it. So खाली opinion देना बहुत easy है. हम सब कर लेते हैं. सबको समझाना, भाई ये कर लो, वो कर लो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, राइट? बड़ी बड़ी बातें हम सब कर लेते हैं, पर इस पर अमल करना जरूरी है. सो इन्होंने जो कहा कि भाई ये हिस्ट्री हमें लिखनी चाहिए, वी शुड बी द वन राइटिंग अवर हिस्ट्री, और एंड ही डिड दैट. ओके, और हिस्ट्री ऐसे वैसे नहीं लिखे, ऑथेंटिक सोर्सेस लिए हैं, कंप्लीट पिक्चर देने की कोशिश की है, राइट? सो ही हैज वर्कड रियली हार्ड टू व्हाट ही बिलीव्ड. सो सिर्फ बिलीव करके छोड़ नहीं दिया, बट उन्होंने उस पर काफी काम भी किया है. One other scholar that we have here is विष्णु शास्त्री चिपलुंकर. दूसरे जो एक स्कॉलर यहाँ पे मेंशन किए हैं, अगेन फ्रॉम महाराष्ट्र, इज विष्णु शास्त्री चिपलुंकर. He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers. उन्होंने, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री लिखी है, उसको क्रिटिसाइज किया है. एंड वी नो व्हाई, राइट? बिकॉज इट इज प्रिजुडाइज्ड, it is ridiculing us, right? It is a biased account. So he has criticized that account. That is Vishnu Shastri Chiplunkar. Now let us understand the role of the nationalistic historiography. ये जो nationalistic historiography थी उसका क्या impact था? Okay, so one of the major contributions was in the triggering of the independence movement of the Indian people. So इसकी वजह से अभी लोगों के अंदर वो एक जागृति आ रही थी, ओके, कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, बहुत हो गया. So it was triggering the independence movement of the Indian people against the British, right? This reminds me of the book titled The Indian War of Independence 1857. हमको याद है, right? 1857 was a movement, right? So वो जो book थी उसका नाम है The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar. Vinayak Damodar Savarkar. Okay, and the other thing that nationalistic historiography did was helped in providing a momentum to the writing of regional histories. अभी यहाँ पे सिर्फ एक इंडियन हिस्ट्री नहीं लिखने में आ रही है, बट ऑल्सो द रीजनल हिस्ट्रीज, राइट? ईच रीजन हैड इट्स ओन हिस्ट्री. हर एक रीजन के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा था, तो हर एक रीजन की हिस्ट्री का होना भी ज़रूरी था. सो जैसे कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, और फॉर दैट मैटर एनी पार्ट ऑफ द of our country, India, right? So nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories. Well, with this, we are done with the nationalistic historiography, and now let's move to the next subsection. नेक्स्ट इज हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद का जो टाइम था, वो टाइम की हिस्टोरियोग्राफी में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. As you can see, the scholars in this era felt the need of writing histories of various communities, sciences, cultures, etc. Right? So we've already talked that history is not just about some kings or some influencing people. It has to be a holistic perspective, right? So it's dynastic, it's cultural, social, economic, sciences, political ideologies, various communities. Okay, so history खाली सिर्फ रूलर्स के बारे में, वॉर्स के बारे में, या सिर्फ बड़े लोगों के बारे में नहीं है.
हिस्ट्री इज अ complete picture, right? It has to include all the elements. So हम उसके अंदर सारे elements का होना बहुत ही ज़रूरी है. कल्चर क्या था, सोसाइटी कैसी थी, हाउ वाज द इकोनॉमिक कंडीशन, वो ज़माने में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी पॉलिटिकल बिलीव्स क्या थी, कैसी अलग अलग कम्युनिटीज थी, ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में स्कॉलर्स को लगा कि ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ों से हमें कंप्लीट पिक्चर मिलता है, और इसके बारे में हमने काफ़ी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. Okay, so basically this period, the post independence era का जो historiography है, it is influenced by three ideological schools. Okay, इसका influence कहाँ से आता है? तीन अलग अलग ideological schools से आता है. So which are Marxist history, subaltern history and feminist history. Okay. The first here is Marxist history. कुछ याद आ रहा है फर्स्ट चैप्टर में से? Are the bells ringing? Yes, let's understand it better. I'm sure you remember Karl Marx from first chapter, right? And his theory of class division. Yes, you do, I know, I know. So Marxist historians or Marxist historiography is about the means and modes of production and the industrial relations. Okay, means and modes of production. अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में से याद है तो आपको बराबर याद आएगा कि मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो सबके पास नहीं थे, राइट? सो देयर वाज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट. सो मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही, जो रिसोर्सेज बनते हैं, राइट? जो भी है, वट एवर वी नीड टू लिव अ लाइफ, सो मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. और ये अगर हम जनरल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में होता है, राइट? सो मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द industrial relations. So this was at the heart of the writings of the Marxist historians. So their focus was on these means and modes of production, किसके पास है, क्या है, and the industrial relations. Okay, and the other part of it is analyzing the impact of every social event of significance. Okay, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट सोशल इवेंट्स थे उनका क्या इम्पैक्ट होता था, उसका एनालिसिस करना भी उनके लिए काफ़ी ज़रूरी था. दैट वाज वेरी क्रूशियल. ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि सोसाइटी में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ्स पे होता है, राइट? सो उसका एनालिसिस करना भी इनका एक मेन मोटिव रहता था. सो मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, and the second is analyzing the impact of every social event of significance. Some of the Indian historians who adopted this theory, this historiography model, were Damodar Dharmanand Kosambi, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharan Patil, Comrade Shripad Amrut Dange. So आप इस नाम को कैसे याद रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं ना मूवी आप सबने देखी होगी, राइट? राम शर्मा, शाहरुख खान का जो रोल था, राइट? सो वो एक नाम राम शरण शर्मा आप उस तरह से याद रख सकते हो. अभी उसके बाद के जो दो नाम है वो उसी पे से हम याद रख सकते हैं. अभी वो मूवी में शाहरुख खान वाज ऑन अ मिशन, राइट? एक ट्रस्ट वर्दी मिशन पे थे. सो जो इट्स लाइक एन कॉमरेड इज समबडी, इट हैज मेनी मीनिंग्स बट वन ऑफ द मीनिंग्स इज अ ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड. सो एक ट्रस्ट रहता है, राइट? जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो. सो ही वाज ट्रस्ट वर्दी एंड ही वाज गिवन अ मिशन, राइट? सो कॉमरेड आपको वहां से याद रह जाएगा. सो कॉमरेड शरद पाटिल एंड कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, दोनों एस एस पे से ही है, राइट? सो आप इस तरह से उसको याद रख सकते हो. ओके, सो दामोदर धर्मानंद कोसंबी, राम शरण शर्मा,
Comrade Sharad Patil, Comrade Shripad Amrut Dange. ओके, सो अभी कॉमरेड श्रीपद अमरुद डांगे जो है उसके बारे में हम थोड़ा और भी यहाँ पे जानेंगे. He was one of the founding members of Indian Communist Party. Okay, इसके लिए वो कॉमरेड नाम वहाँ से आता है. So one of the founding members of Indian Communist Party, right? और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. सो अब कम्युनिस्ट पार्टी है और ये कम्युनिज्म यहाँ पे वापस आता है वो वर्ड, राइट? सो बुक का नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी विच represents the Marxist historiography. Okay, so सब historians जो थे they studied the transitions within the caste system. Fine. Moving on further, we have subaltern history. So let's understand this now. By the way, the sets of subaltern historiography are found in the Marxist historiography. सो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में से सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी आता है, राइट? अगर आपको याद है तो जस्ट फ्यू सेकंड्स अगो we said that the Marxist historiography studied the transitions within the caste system, right? So the roots of subaltern historiography, उसका बीज कहाँ से आया, उसको सीड कहाँ से मिला, उसको ग्रोथ कहाँ से मिला है, so that is from the Marxist historiography. Subaltern का मतलब क्या है? It means the bottommost ranks. Okay, हम जानते हैं कि वो ज़माने में सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, राइट, इनटू डिफरेंट क्लासेस. सो subaltern is about the bottommost rank. So सबसे नीचे है उनकी हिस्ट्री है ये. Okay, so this is the history about the people at the bottommost ranks in the society. Here we see that Antonio Gramsci was an Italian scholar. He has played a very important role in developing this idea. Subaltern historiography को develop करने के लिए Italian historian Antonio Gramsci का काफ़ी बड़ा role रहा है. He's played a very important role. He believed that the history should be written starting from the bottommost ranks of people in the society. क्या मानना था इनका कि हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए उस हिस्ट्री की? स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटममोस्ट रैंक्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी. तो सबसे नीचे जो कैटेगरी में जो लोग थे, जो उन सबसे नीचे की जो क्लास थी उसके जो लोग थे वहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होनी चाहिए. Okay, now coming to the Indian context, Ranjit Guha. Ranjit Guha. He is an Indian historian, right? As I said before. He played an important role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. Okay, so he has played a very important role कि subaltern history जो है that should be established now, okay, and it should become an important academic school. It's one of the ways of looking at history, right? So उसका importance बढ़ता ना और उसको properly establish करने में उनका काफी बड़ा योगदान है. He has played a very important role there. Okay, folklore is a very important source to write subaltern history. So subaltern history का जो important source है, one of the important sources is folklore. Was this new for India? आपको क्या लगता है ये जो folklore है, ये जो भी है subaltern की हम बात कर रहे हैं, is this a new concept to India? Not really. Gulamgiri, a book written by Mahatma Phule. Okay, there was a book called as Gulamgiri. गुलामगिरी आप समझ सकते हो, राइट? गुलामगिरी, स्लेवरी की बात हो रही है यहाँ पे. It was written by Mahatma Phule. So this book talks about the exploitation. Okay, जो exploitation होता था, किसका exploitation होता था? किसका exploitation होता था? Women, Shudras and Atishudras. Oh, and this exploitation was done in the name of religion. मजहब के नाम पे ये exploitation होता था. Here I want to say
No religion teaches exploiting or harming others. I'm repeating myself. No religion in the world teaches exploiting or harming others. जब कोई बोलता है कि ये religion ऐसा लोगों को परेशान करने का सिखाता है, that is absolutely nonsense. I'm sure you know this line. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. ओके, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. So who are these Shudras and Atishudras? They are the bottommost ranks in the caste system. Okay, Shudras and Ati Shudras. Ati, I know, I'm sure you know Hindi, right? Ati, and जब हम ये word डालते हैं, we mean to say a lot. Ati आवश्यक है, right? So it means it's very needed. So Shudras and Ati Shudras, यानी और भी ज़्यादा. Okay? So this like और भी नीचे. So these are the bottommost ranks in the society. Thus, this book, Gulamgiri by Mahatma Phule, unfolded the history of the Shudra Atishudra communities. It unfolded the history of Shudra and Atishudra communities. Also, we have famous Dr. Baba Sahib Ambedkar. हम सबको मालूम है, right? हम अब Dr. Baba Sahib Ambedkar जयंती भी मनाते हैं. So even he has played an important role in this history. And here are his two famous books. Who were the Shudras? And the other is the Untouchables. So डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यहाँ पे दो बुक्स का नाम मेंशन करने में आया है. हु वर द शुद्राश. हम यहाँ पे शुद्रा शुद्रा कर रहे, राइट, बट ये कौन थे? एंड द अदर वन इज द अनटचेबल्स, जो अछूत हम बोलते थे, राइट, वो जमाने की बात है. वी नो मोर बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, राइट. हम बड़े छोटे हमारे काम से होते, काम इन द सेंस नॉट the profession, but our ethics, our value system, our moral system. Okay, so this is about the subaltern history. Feminist history. Again, you can recall your knowledge from the first chapter here. As you can see, this is what we had done in chapter 1, right? From women's perspective, feminist history की बात हो रही, तो women's perspective से वो history होनी चाहिए. So it includes what? Including women in history. History के अंदर women का role क्या है वो भी आना चाहिए. What role did they play? What were they doing? So women को include करने की बात है. And rethinking of the male dominated perspective of history. सो जो हिस्ट्री है, जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव है, अभी उसको अलग से प्रॉपरली देखना विमेन के पर्सपेक्टिव से, और उसको मेल डोमिनेट ना रख के विमेन को भी इंक्लूड करने की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर अबाउट this feminist. Here we have is Tarabai Shinde. What was her contribution? She was the foremost woman author attacked male dominated social system and also the caste system. Foremost woman author, okay, one of the beginners of the women involvement. It is about women getting involved in writing history. She is one of the foremost women authors. यानी बहुत initial में जब women author शुरू हुए थे, she is one of them. Okay, and what did she do? She attacked the male dominated social system and also the caste system. So उनकी बुक का नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना. स्त्री पुरुष तुलना, right? So स्त्री पुरुष, female male, तुलना, comparison, and it was written in 1882. This was the first feminist book in India. Of course, she was one of the foremost women writer, right? So this book is the first feminist book in India. Stri Purush Tulna. Okay? So ताराबाई शिंदे, अभी तारे चमकने लगे हैं, ताराबाई शिंदे आ गई है और उन्होंने सीधा के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को अटैक किया है और कास्ट सिस्टम पे भी, और बुक लिख डाली स्त्री पुरुष तुलना in 1882. Now we have Pandita Ramabai.
ओके, पंडिता रामाबाई। उन्होंने क्या किया है? उनकी बुक है जिसका नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमन। ओके, हाई कास्ट हिंदू वुमन, जो 1888, यानी आफ्टर 6 years from the first book. Yeah. And what did she focus on? She focused on issues like employment of women, women treatment at work, etc. So her focus is on how women are treated at work. What are they employed? Where are they employed? And all those things. It's easy to remember her focus because even today we read about all these issues, right? हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, हम सुनते रहते हैं कि even today the society is not changed completely. आज भी women have a lot of issues in their employment, the way they are treated. Sometimes कोई कोई profession लेता है तो बोलते हैं अरे भाई तेरा क्या काम है, वहाँ पे तो सिर्फ लड़के होते हैं, right? So this mentality still exists, and even in offices in some places, not everywhere of course you would, but some places you still see that women are suffering. So this is easy to remember. These issues are even today. Hopefully someday these issues will vanish and everybody, irrespective of gender, caste, age, language, religion, everybody will be treated equally. Next is मीरा कोसम्बी। उनकी जो राइटिंग है वो है Crossing Thresholds. Crossing Thresholds. These are basically feminist essays in social history. Okay, it contains life stories of Pandita Ramabai, Dr. Rukhamabai, etc. So it is not very old, it is much recent publication. Okay, मीरा कौसम्बी बहुत पुराना नहीं है, it is a recent one, और जिसके अंदर ये जो पहले की जो राइटर्स थे, जो फेमिनिस्ट ऑथर्स थे, जैसे कि ताराबाई है या डॉक्टर रुखामाबाई है, उनकी लाइफ के बारे में इसके अंदर कवर करने में आया है. Yes. And the final on the list is Dr. Sharmila Rege. She focused on Dalit women in her book. Unka focus kis pe tha? Dalit women pe, okay? So it is still feminist history, but she is now focusing on Dalit women. And her book is Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies. Writing Caste, Writing Gender. So Dalit, right? We're talking about caste, and writing gender, we're talking about women, right? So Dalit women, so writing caste and writing gender, reading Dalit women's testimonies. So this book contains the autobiographies of the Dalit women. Easy, right? So these are the four ladies that we have here: Tarabai Shinde, Pandita Ramabai, Meera Kosambi, and Dr. Sharmila Rege. So it's all about feminist history. Well, we also have some historians who didn't embrace any particular ideology. जो इतनी सारी अलग अलग आइडियोलॉजीज हमने देखी, उसमें से कोई भी आइडियोलॉजी को उन्होंने embrace नहीं किया था. They did not stick to any of these ideologies. They had their own way of doing things. So they did not embrace any particular ideology. Okay, so they did not embrace any particular ideology. Thus, we can say that Indian historiography was greatly influenced by the social and political movements, right? Social and political. Social is society, politics is politics, right? So, the British rule, it impacted society, the caste system. So, greatly influenced by the social and political movements, and also some part outside this influence, as we said, did not embrace any particular ideology. So, some part outside this influence. With this, we complete the whole chapter. So, here we are, done with the whole chapter. Wasn't that easy? Do you say that happy history now? Yes, it's very simple. I'll come with more videos for all the chapters. Do keep watching them. कीप वॉचिंग देम अगेन एंड अगेन, ताकि आपको वो याद रह जाए. बराबर से एक बार देख के छोड़ नहीं देना है, बार बार रिपीट करना है. आपको बीच में ब्रेक लेना है तो ब्रेक लीजिए, बट इसे बार बार देखिए, क्योंकि इसमें आपके पास पिक्चर्स है, आपके पास वॉइस है, तो आपको इजीली ये सब चीज़ें याद रह जाएगी. ओके, so keep watching and I wish that you score really well in your exams. Thank you very much.
Do remember to subscribe so that you get notification when we upload new videos, right? Do remember to like, share, and comment as well so that your friends also can know about it.